Jai Radha Madhuva Kunya Vihare Kunya
Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Jai Go Premananda Jai Om Vishnupad Paramahansa Paravidakacharya also Tada Sitashi Shima, this divine grace of Ayachanana Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Jai Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Paramse Kaho Shri Krishna Chaitanya Puravanityananda Shidvaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopada Sayam Kunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mathuram Ki Jai. Jagadasami Ki Jai. Yamunamaya Ki Jai. Shrimati Vilasi Devi Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premananda. All glory is the assembled devotees. All glory is the assembled devotees. All glory is the assembled devotees. All glory is to Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada Ki Jai. So, Om Ganat Sivananda Shah Gananjana Shakya Chakshura Meditam Yena Tasmai
Shigurave Namaha. So you're going to translate or no? I think we need translation. So who's going to translate? Yeah, Rasavihari. Is microphone for him? That's right. So, we are very happy to be here in Labasa Yatra with all the enthusiastic, jumping devotees. गुरु महाराज बहुत ही प्रसन्न है लंबासा यात्रा में आकर भक्तों के साथ देखकर कि कैसे नाच रहे झूम रहे हैं। As Prabhupada, as Krishna says, in the Gita actually he says, Kartavyam, he says, Raja Vijay Rajaguyam Pavitramitamuntamam Prachaksha Bhagavan Charyam Shushu Kam Kartamavyam, that this Krishna consciousness has unlimited happiness, eternal unlimited happiness. कृष्ण भगवान गीता में जैसे कहा जो राज विद्या है जो आत्मा का ज्ञान ले लेता है वो हमेशा आनंद में रहता है तृप्त हो जाता है। So in the spiritual world these devotees can dance 24 hours a day. आध्यात्मिक जगत में ये भक्त लोग जो नाच रहे हैं वहाँ हमेशा नाचेंगे। Anyway, so this evening we are commemorating a engagement ceremony. आज हम सब एक उत्सव में आया है। And so therefore I want to speak a little bit about Krishna conscious marriage. और उसके दौरान में गुरुदेव बात करेंगे कृष्ण भावना को कैसे लेकर चलना चाहिए। And speaking about Krishna conscious marriages, I wanted to talk about some examples from the Shastras. तो गुरु महाराज कई उदाहरण निकालेंगे शास्त्रों में। The main point in Krishna conscious marriage, in Krishna conscious life, is something that's described by Krishna in the Gita, Ekeha Kurunandana. कृष्ण भावना मित्र में और विवाह संस्कार को कैसे लेकर जीवन व्यतीत करना चाहिए वो गुरु महाराज कह रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण को अपने मध्य में रखना चाहिए। So Ekeha Kurunandana means being one-pointed and fixed in one's determination. और एक ही गुरुनंदन का मतलब है कि एकदम श्रद्धा और भगवान श्री कृष्ण में आसक्ति लगाए हुए। Okay, that's a little small. Sorry. It's good for a crown. So, just like the example in the Mahabharata of Arjuna, when Arjuna was being tested by his spiritual master Dronacharya. जैसे उदाहरण गुरु महाराज महाभारत को दे रहे हैं कि अर्जुन किस प्रकार से उसके गुरु ने उसकी परीक्षा लिया था। Shri Dronacharya, he said to all of his students, there is a bird in the tree and you should shoot at the bird's eye. द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया है और चिड़िया के नेत्र में आपको बाण लगाना है। So he had all the other students other than Arjuna go first. सभी शिष्य आगे गए, अर्जुन नहीं गए थे। And generally they said, when we asked them, what do you see? They said, well, we see the tree, we see you, we see the bird, we see the sky. And so he said, no, go away. और एक एक शिष्य से पूछा गया क्या दिखा है, तो किसी ने कहा मुझे वृक्ष दिखा रहा है, मुझे चिड़िया दिखा रहा है, और कोई कहा गुरुदेव मुझे आप भी दिखा रहे हो। But then he asked Arjuna, as Arjuna was getting ready to shoot the arrow, he said, what do you see? और उसी समय जब अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन बाण से निकालने का तीर मारने वाला था, गुरु ने पूछा क्या देख रहे हो? And Arjuna said, I just see the eye of the bird. और अर्जुन ने एक चीज कहा, चिड़िया भी नहीं, खाली आँख ही दिखा रहा मुझे। I don't see anything else, I don't see you, I don't see the tree, I just see the eye. मुझे कुछ नहीं दिखा रहा गुरुदेव, आप नहीं, चिड़िया भी नहीं, खाली आँख ही दिखा रहा। So practically speaking, in this world and in the spiritual world, in Krishna consciousness, if you want to be successful at anything, you have to be like Arjuna. अगर कृष्ण भावना में आप उन्नति करना चाहते हो, तो आपको अर्जुन जी का उदाहरण पालन करना चाहिए। That doesn't mean that everyone should be shooting arrows. इसका अर्थ ये नहीं कि आपको बाण तीर निकाल कर मारना है। Of course, generally when you're talking about a marriage, there is Cupid shooting his arrows.
जब भी हम लोग विवाह की बात करते हैं तो कई स्वयंवर में बताया गया है होते हैं सब. So anyway, we're talking about just being fixed on your promises, your vows, and your determination. यानी कि इसका अर्थ है आज के जो समारोह है कि कितना तुम स्थिर हो, कितना दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ अपने सभी नियमों को, कसमों को, वादे को निभाओगे. In spite of so many tests, trials, tribulations, that means trouble, and one has to just simply be fixed on that goal. जीवन के कई परिस्थितियों में दुख सुख के पार करते हुए तुम्हें स्थिर रहना पड़ेगा. So in marriage it means both the husband and the wife have to be fixed on their promise to remain faithful to each other. विवाह का अर्थ रह जाता है कि स्त्री और पुरुष जो मिलता है वो अपने वचनों में, कसों में हमेशा स्थिर रहेंगे. Now in the age of Kali, practically speaking, people do not keep their promises. कलयुग में लोग ज्यादातर अपने वचन, वादा, कसमों को नहीं निभाते हैं. Of course, there are 4 principles of religiosity: cleanliness, mercifulness, truthfulness, and austerity. And at the beginning of Kali Yuga, truthfulness was the only principle left. धर्म के 4 पांव हैं और 4 पांव में से कलयुग में सिर्फ एक ही बचा है, सत्य का. And as we see, the progress of Kali Yuga is going on. Even truthfulness is very quickly diminishing, and practically it's gone, even in the beginning. और धीरे-धीरे जैसे कलयुग परिवर्तन करते चला जा रहा है, तो जो सत्य है वो भी धीरे-धीरे घसक रहा है. And we see this, of course, in politics. We see this, of course, in relationships where there's so many divorces nowadays. We see this, of course, in friendship, in families. People are just not sticking to their obligations. और कली के प्रकोप से असत्य का जो मार्ग है घर में आ चुका है, मित्रता में आ चुका है, पति पत्नी में आ चुका है, सब जगह आ चुका है. So we're going to tell some stories that illustrate from the Vedic literatures how one has to stick to their obligations. तो धर्मशास्त्र के भीतर से गुरु महाराज एक कथा बताएंगे कैसे हम अपने वचनों पे टिकना चाहिए. First story is from the Ramayana. पहला कथा रामायण से मैं बतलाऊंगा. Of course, as we know, Lord Rama had one wife and one word and one arrow. भगवान श्री राम की एक पत्नी था, एक शब्द था और एक ही तीर था. And even when that beautiful girl Surpanaka approached Ram, यहाँ तक भी बहुत सुंदर रूप बनाकर सुपने का ही थी, he refused. But actually, the story I'm going to tell right now doesn't have to do with Lord Ram. It has to do with Lakshman and his wife. लेकिन मैं कथा बताने जा रहा हूँ लक्ष्मण और उनकी पत्नी. His wife's name was Urmila. लक्ष्मण जी का पत्नी का नाम उर्मिला था. So when Lakshman was going to serve Ram, in a very faithful way, determined to serve Ram, he told his wife, Urmila, you cannot cry for the whole time we're gone. लक्ष्मण महाराज जब भगवान श्री राम जी को वन में सेवा करने के लिए जा रहे थे, दृढ़ता के साथ अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है. Can any of you ladies not cry for 2 days? आज की माताएं ऐसा हो सकते हैं? Raise your hand if you 2 days, no cry. कौन कौन नहीं रही हाथ उठाओ. 5 minutes. So she was so determined to be chaste to her husband, she didn't cry the whole time that they were gone. और वो पति के आज्ञा पालन करी थी और नहीं रोई थी 14 साल तक. And even in the case of Mandodari, Ravana's wife, she never left Ravana. She knew better, but she stayed faithful and even preached to Ravana. मंदोदरी पतिव्रता धर्म को निभाई, यहाँ तक उसके पति अधर्म करते थे लेकिन अपने पति को छोड़ा नहीं. And Sati, the wife of Lord Shiva, when Lord Shiva was insulted by her father, she just left this world. सती बताया गया जो शिव भगवान की पत्नी है, उनके पिता ने जब भगवान शिव जी का निरादर किया, उसने अपना शरीर को होमन कुंड में कूदकर भस्म कर दिया. And then in the Markandeya Purana, there's the story of a lady who was able to stop
the rising of the sun. मार्कंड पुराण में एक सती की कथा है जो उगते हुए सूरज को रोक दी थी। So the story is as follows. Her husband had leprosy. बताया गया उनके पति को कोढ़ की बीमारी हो गया था। And they were walking, and somehow or other her husband by accident touched the sage Markandeya Rishi. और दोनों जा रहे थे तो क्या हुआ, उनके पति जो कोढ़ की बीमारी था मार्कंडेय ऋषि को स्पर्श कर दिए थे। And Markandeya Rishi got so angry he said, "I curse you to die before the sun rises the next day." मार्कंडेय ऋषि ने श्राप दिया कि बिहान सूरज उगते ही तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। And she said, "The sun is not going to rise." तो उनके जो पति वर्ता धर्म निभाने वाली पत्नी उसने प्रतिज्ञा ले ली कि अगर सूर्य के उदय से पति का देहांत हो जाएगा तो मैं सूर्य के उदय होने नहीं दूंगा। So she kept the sun from rising and saved her husband's life. और उसने सूर्य को उदय होने नहीं दिया, अपने पति को आयु को लंबा कर दिया। That's the power of determination. ये बताया गया शक्ति है तुम्हारा दृढ़ता का। It says that a chaste lady can stop the rising of the sun or the moon and change history. एक पतिव्रता स्त्री जो है सूर्य के जो उदय उसको रोक सकते हैं और इतिहास को बदल सकते हैं। And because the chaste lady got insulted, the whole battle of Kurukshetra was fought and the whole dynasty was destroyed. आप सभी जानते हैं महाभारत में एक पतिव्रता स्त्री को निरादर किया गया था, उसके कारण से महाभारत आया और सभी कौरवों का विनाश किया गया। So it's so important both for the husband and the wife to be dedicated to each other and loyal. ऐसे ही स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और निष्ठा धरना चाहिए। Now I'm going to tell a famous story that's very interesting. It's the story of Nal and Damayanti, which illustrates the same point. और गुरु महाराज एक कथा बताने जा रहे हैं भागवत पुराण के दमयंती के कथा। You said Nal and Damayanti? Yes. Nal and Damayanti. Yeah. Okay. Once upon a time, there was a great king. His name was Nal. एक समय के बाद है एक राजा था, उसका नाम था राजा नल। He was the king of the Nishadas. और वो निषाद का जो राजा है उनका राजा था। They're like the forest people. निषाद लोगन वन में रहते हैं। So he liked dice a lot. और ये जो है बताया कि जुआ जो है बहुत अच्छी पसंद करते हैं। But he didn't have a wife at that point. लेकिन राजा नल के पास पत्नी उस समय नहीं थी। At the same time, there was another king named Bhima who had a daughter, and her name was Damayanti. वही जगह एक और राजा भीमा था, उनका एक लड़की था जिसका नाम था दमयंती। And they both heard about each other through the agency of a swan messenger. और बताया गया दोनों एक दूसरे के बारे में जान गए थे स्वान के द्वारा। So the swan would speak to both of them, to Damayanti and to Nal, and they talk about each other. और ये स्वान के द्वारा दमयंती और राजा नल में बातचीत होते थे। So even without seeing Nal, Damayanti fell in love with him. और बताया गया दमयंती अभी नल राजा को देखा नहीं था, लेकिन उनके बात चर्चा सुनकर स्वान के द्वारा उनसे मोहित हो गए। That's similar to the story of Rukmini, who heard about Krishna. जैसे श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी माता की कथा जो कृष्ण भगवान के बारे में सिर्फ सुनकर, and they were trying to arrange her marriage with Shishupal, and Krishna had to come and kidnap her. क्योंकि रुक्मिणी माई ने अपना मन दे दिया था कृष्ण को और उनका विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा था, तो कृष्ण भगवान आया था। That type of marriage is called a Rakshasa marriage. और भगवान कृष्ण ने उसका हरण किया था और विवाह के नाम है राक्षस विवाह। It's bona fide. वो भी बताया गया है हमारा धर्म के अनुसार। And there's another type of marriage called a Gandharva marriage. एक और एक विवाह है जिसका नाम है गंधर्व विवाह। That's where they just exchange garlands. खाली माला बदले से भगवान के आगे विवाह हो जाती है। Now that's when Shantanu and Ganga Devi just exchanged garlands, so they were married. जैसे महाभारत में शंतनु राजा ने गंगा माई के साथ आदान प्रदान माला किए थे। And there's another type which is the regular vivaha with the fire sacrifice and everything. और एक विवाह है जहाँ पर ब्राह्मण विवाह जिसको यज्ञ के द्वारा करते हैं। So what we have here today is going to be just a regular
engagement ceremony, and then later there'll be a marriage. आज जो है उत्सव है मुद्रिका मिलन उत्सव है जो होने जा रहा है जो विवाह से पहले होता है. So that's the slow system. So if you want the fast system, then you do the Rakshasa style. और सबसे तुरंत फुर्ती वाला है राक्षस विवाह. So any of you men who are not married, you pick the lady. Get out. जो नहीं शादी करी इस राक्षस बारे में सोचते रहना. Anyway, getting back to the story. So Nal and Damayanti were completely in love with each other without having seen each other. एक दोनों राजा नल और दमयंती देखे नहीं थे लेकिन दोनों से प्रेम हो गया था. But Damayanti's father wanted to arrange something called a Swayamvara. लेकिन दमयंती के जो पिता है वो तो स्वयंवर रचना चाहता था. The word Swayamvara literally means that the girl chooses her own. It doesn't mean she's forced. स्वयंवर के मतलब है जो कन्या है वो अपना वर को स्वयं अपने ही उसको मानती है. Just like when there was the Swayamvara for Draupadi and Karna was trying to compete, Draupadi said, "No, I will not marry that rascal." जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में वहां पर कर्ण था और वीर कर्ण और द्रौपदी से विवाह करना चाहता लेकिन द्रौपदी माई ने उसको मना कर दिया कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करता. So Damayanti's father declared a Swayamvara, but she was so attractive that demigods wanted to come to the Swayamvara. तो दमयंती के जो पिता है इसने बड़ा विशाल स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में देवताओं आ गए क्योंकि दमयंती इतनी सुंदर थी. In fact, Indra one time asked Narada Muni, "Where did all the Kshatriyas go? We don't see them fighting anymore." और एक बार बताया गया देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से पूछने लगा कि सब क्षत्रिय कहाँ गया कोई लड़ नहीं रहा है. And Narada Muni said, "They've all gone to the Swayamvara. They want to marry Damayanti." और देवर्षि नारद ने कहा सब क्षत्रिय दमयंती के स्वयंवर में गया सब शादी करना चाहते हैं उससे. So there was Indra, even Yamaraj went, Varuna, Agni, these are called the Lokapalas. और क्या हुआ देवलोक से यमराज इंद्र वरुण ये सब आ गए वहां के लोग. And on the way, they saw Nal, who was going to the Swayamvara too. और उसी स्वयंवर में राजा नल भी जा रहा था. And they asked Nal just to introduce them to Damayanti. और वहां पर राजा नल ने अपने आप को प्रस्तुत किया दमयंती जी के आगे. They were testing his determination and his loyalty. और राजा नल के जो दृढ़ता था वो परीक्षा लेने के लिए कर रहे थे. And to trick Damayanti, they all took on the same form as Nal. और क्या हुआ सभी देवताओं वहां पर थे दमयंती को छल करने के लिए चालाकी करने के लिए सब ने नल का रूप ले लिया. So she was looking at all these different Nals there and thinking, who is the real Nal? तो दमयंती जब देखने लगा नल सब राजा नल के समान तो उसने बोला इसमें से जो मुख्य कौन है. And then she saw that one of them was sweating and she understood demigods don't sweat, so that's the real Nal, the guy who's sweating. और जो देवता है वो पसीना पसीना नहीं हो रहा था लेकिन एक ही था जो पसीना हो रहा था और वही यही राजा नल. And so they got married. और क्या हुआ राजा नल और दमयंती का विवाह हो. But that's not the end of the story. लेकिन वो कथा का अंत नहीं है. Because the demigods were really angry that they had been cheated out of marrying Nal and Damayanti. तो देवताओं क्रोधित हो गया कि कैसे इन दोनों का विवाह हो गए. And so, especially two of the demigods were really angry. That's Kali and Dwapara. और दो देव बताया गया एकदम अत्यंत क्रोधित हो गए. एक कली था और एक द्वापर था. Kali is called the worst of the demigods. कली जो है सभी देवताओं में सबसे नीच स्तर पर है. During the Mahabharata period, Kali took birth as Duryodhana. महाभारत के युद्ध में देव कली ने दुर्योधन के रूप लेकर आया था. And Dwapar took birth as Shakuni. और जो द्वापर है वो सुकनी बनकर आया था. That's Mahabharata, of course. So they're always causing trouble. और ये दोनों हमेशा दुख ही देते. And they're causing trouble even now. We say Kali Yuga.
और आज तो बहुत ज्यादा दे रहा है कलयुग। At the end of Kali Yuga, people will be living underground, will be this short, eating each other. कलयुग में लोग बहुत छोटे हो जाएंगे, बुद्धि एकदम सड़ जाएंगे। And even now we find people fighting each other for no reason whatsoever. दूसरे की बुराई, दूसरे की कचकच, खाली यही लेके मन में चली, सड़ गई बुद्धि। Srila Prabhupada stated that the only thing that would stop the progress of our Krishna consciousness movement is fighting between the Vaishnavas. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा कृष्ण भावना को कोई रोकेगा नहीं, भक्त लोग हैं, दूसरे की बुराई देखेंगे और यहीं पे चलेंगे, सड़ गई बुद्धि। So when Vaishnavas fight, that's Kali is there. जब वैष्णव लड़ेंगे नहीं, झगड़ा करेंगे, बुरा विचार धरेंगे, तो मतलब कलयुग उसके बुद्धि मल गए। When we criticize Vaishnavas, that's Kali. जब कोई भक्त जैसे दुर्गुण गाए, समझना कलयुग इसको बुद्धि हल गए। And of course, Kali is there where the four regulated principles are broken. और उसके अलावा जहाँ पर ये चार नियम को भंग किया जाए, वहाँ पर भी कलयुग है। Okay, so back to the story. So Dwarpar became dice. That's like Shakuta. और द्वापर जो है वो बताया कि घुट्टी बन गया था। And Kali was looking for fault so he can enter into the consciousness of Nal. और जो कली है वो बताया गया है दुर्गुण देख रहा था, जहाँ दुर्गुण है वहीं में कलयुग हली। So once upon a time, Nal made a mistake. He didn't wash his feet at the right time. और एक समय राजा नल अपना पैर नहीं धोया था। And so then Kali entered his consciousness and made him attracted to gambling. और उनके पैर के ही द्वारा कलयुग अंदर प्रवेश हुआ, उनके बुद्धि को हिलाया और जुआ में लेकर चला गया। Similar to the Mahabharata, where Yudhisthira became enamored with gambling, thinking he was going to win, and even gambled away his own wife and his brothers and his kingdom and everything he had. जैसे महाभारत में युधिष्ठिर महाराज और वो सोच रहा था कि मैं ही जीतूंगा और प्रति क्षण हारते गया, सभी कुछ हार गए। So Kali told the brother of Nal, whose name was Pushkara, you should play dice with him and gamble and win his kingdom. और कली ने बताया कि इनके साथ आप ये कीड़ा खेलकर और आप उनके संपूर्ण राजपाट जीत लीजिए। So Nal eventually lost everything because remember the dice were actually Dwarpar. तो आप सभी लोग जानते हैं वो जो गुट्टी है उसमें द्वापर है, तो कलयुग के द्वारा मिलकर राजा नल के संपूर्ण संपत्ति को हरण कर चुका था। Of course, Nal did not gamble his wife. He gambled everything else. राजा नल ने सभी कुछ जुआ में हार गया, लेकिन अपने बीवी को उसने दांव पे नहीं लगाया। So they were kicked out of the kingdom and they were only had one piece of cloth for each one of them. पूरे संपूर्ण साम्राज्य से उनको लात मारकर निकाला गया, सिर्फ एक वस्त्र था उनके पास। So they had no food, nothing. So for 3 nights they had to fast. 3 रात तक उनके पास न भोजन न पानी कुछ नहीं था। And then Nal tried to catch some birds to eat, and he threw his cloth to catch the birds, and the birds flew away with the cloth. और राजा नल ने क्या किया, एक चिड़िया को खाने के लिए अपना वस्त्र फेंका और वो चिड़िया ने उसका वस्त्र भी लेकर चला गया। So basically, then she had to cut her cloth, or share the same cloth, with Nal, and so they had one cloth between them. तो दोनों ने फिर उसके पत्नी ने क्या किया, अपना वस्त्र जो था उसको आधा कर अपने पति को दिया। But since Kali had entered his consciousness, he did something very bad. He cut that cloth and in the middle of the night ran away. लेकिन क्योंकि कली उनके मस्तिष्क में चढ़ गया था, रात्रि में वस्त्र को काटकर और वहां से चले गए। Also, this indicates a very important point for us. When Kali enters our consciousness, we will do things against Dharma. देखो जब कली हमारे मस्तिष्क में चढ़ता है, हम सब कुछ विपरीत करेंगे और कुछ और नहीं, विपरीत करेंगे। So Kali, as I mentioned before, means quarrel. It means, of course, breaking the principles. It means not sticking to your determination. Kali is everywhere in this Kali Yuga. कली के मतलब है दूसरे में दुर्गुण देखना और धर्म पर स्थिर नहीं रहना और दृढ़ता के पूर्वक
भक्ति ना करना। So Kali will test you in various ways, not just in the marriage, in your vows that you've taken in initiation, in your life in general. You'll start lying to make money, for example. और कली तुम्हें खाली विवाह में नहीं, वो जगह जगह पे तुम्हारा परीक्षा लेंगे, तुम जगह जगह पे झूठ बोलेंगे, ये कलयुग का ही प्रकोप है। As soon as you lie, Kali has entered. जैसे तुमने झूठ बोला, चालाकी किया, कपट किया, कलयुग समझ जाना प्रवेश हो गया। Just like Krishna says in the Gita, the austerities of speech are satya, priya, hitam, speaking truthfully, pleasingly, beneficially. और जो शब्द है भगवान कृष्ण कह रहा है, वो बहुत आनंददायक होना चाहिए, सबको हर्षित करना चाहिए और मिठास होना चाहिए इसमें। So, anyway, so Damayanti woke up and her husband was gone. और दावंती जब उठी सोई तो उसके पति जो है चले गए थे। And then all of a sudden a giant snake started to attack her. और एक विशाल अजगर बताया गया आकर उनको ग्रहण करने लगा। And a hunter came by and saved her from the snake. लेकिन एक बाधिक आया, सिपाही आकर उनको बचाया उस अजगर से। But because she was so attractive, the hunter felt great lust towards her and approached her. लेकिन वो बाधिक ने क्या, जब देखा दावंती की सुंदरता को आकर्षित हो गया, काम जागृत हो गया उसमें। But because she was so powerful because of her chastity to her husband, she cursed the hunter and the hunter burnt into ashes immediately. लेकिन दामंती ने अपने जीवन भर एक पतिव्रता धर्म निभाई थी, तो उसने अपने उस बल पर श्राप दिया और अग्नि में भस्म होकर वही जलकर राख हो गया। And she was protected in so many ways because of her determination and chastity towards her husband. और बहुत ही तरीका से वो अपने आप को रक्षा करते गई, क्योंकि उनका जो श्रद्धा पतिव्रता धर्म है वो बहुत ही खूबी से निभाई थी। So eventually she made her way into another kingdom and she took the position of Sairindri, which is like a hairdresser for a queen, just like Draupadi did. और क्या हुआ, फिर वही दूसरा राज में जाकर शरिंद्री, जैसे द्रौपदी माई बताया गया शरिंद्री के कार्य किए थे विराट के नगरी में। In the meantime, Nal was wandering around, wondering what to do under the influence of Kali, and he saw that there was a snake that was in the middle of fire, a nag, and he saved the snake. और कलयुग के प्रकोप से राजा नल इधर-उधर भटक रहा था, तो देखा एक सर्प अग्नि के कुंड में जा रहा था, तो उसने उस बताया गया है सर्प को बचाया। And the snake bit him and he became ugly. और वो सर्प ने उसको काटा और काटने के बाद में वो बदसूरत हो गया। But the snake told him, this being ugly will help you regain your kingdom later on. तो वो सर्प ने कहा, ये तुम्हारा जो करूप रूप तुम पाए हो, यही तुम्हें संपूर्ण तुम्हारा साम्राज्य दिया है। And he gave him a cloth that if he put the cloth on himself, he'd come back to his original form. और उसने कपड़ा दिया, वस्त्र दिया, और वस्त्र के द्वारा धारण किया तो अपने स्वरूप में आ गया। So eventually, he went to a kingdom and became the charioteer of a king named Rituparna. और क्या हुआ, एक राज में जाकर वो बताया गया है सारथी बनकर ऋतुपर्णा नाम के राजा का हो गया था। But Rituparna did not know that he actually was Nal, so he just treated him like his charioteer or horseman. तो ऋतुपर्णा जो है वो नहीं जानता था कि राजा नल है, वो उसको सारथी जैसा खाली बदसाव कर रहा था। Damayanti eventually made her way back to her father's kingdom. दामंती जो है अपने पिताजी के फिर वापस यहाँ पे चली जाती है। So she knew she wanted to find her husband. और अपने पति को भरपूर खोज कर रही थी। So what she did is she made a trick. और उसने क्या किया? And that trick was that she announced to all the kingdoms that there would be a second Swayamvara for her. और उसने एक चालाकी से पूरा ऐलान किया कि उनके लिए एक दूसरा दामंती के लिए स्वयंवर रचा जाएगा। So when all the kings heard this, they all rushed, including King Rituparna, where Nal was the charioteer,
they wanted to rush to marry Damayanti. तो सभी राजाएं वहां पर आए, यहाँ तक ऋतुपर्णा जो जिसका सारथी राजा नल है वो भी वहां पर पहुंच गए. So Rituparna went on his chariot with Nal driving it to the ceremony of Damayanti's Swayamvara. और ऋतुपर्णा जो राजा है उनका जो सारथी है स्वयं राजा नल उसको लाते हैं वहां पर. So on the way, he very much pleased Rituparna, and Rituparna, in exchange for understanding knowledge about the horses, taking care of horses, gave him knowledge about dice. और उसी तरह वहां पर उनके पास संपूर्ण ज्ञान था घोड़े के बारे में, तो एक आदान प्रदान बदली करते तो उसको वो गुट्टी दे देते. And because of this, Kali came out of his body and bowed down at Nal's feet and begged for forgiveness. और इसी दौरान पे क्या होता है, वो जो कली है उनके मस्तिष्क से निकल जाता है. So this also indicates that if one is dedicated and chaste and loyal, Kali will not affect you. जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ श्रद्धावान है, वो व्यक्ति के कलयुग कभी छू नहीं. So that Ekeha Kurunandana will keep Kali away. एका ही गुरुनंदन गुरु महाराज कह रहे हैं, वही ही तुम्हें कली से दूर करेगा. So finally, they arrive in the kingdom where Damayanti is, and it's understood at that point. He goes to Damayanti and he reveals himself, and Vayu says that this was just, Vayu the wind god said this is just a trick to get Nal back. So Nal goes back to his kingdom and defeats his brother, and they live happily ever after. और क्या हुआ फिर वहां पर जब आते तो राजा नल ने अपने आप को प्रकट किया, और वहां पर बताया गया वायु देवता कर संपूर्ण रूप से साक्षी बनता है, तो पुनः अपने राजपाट को मिल जाता है, अपने भाई को ये पराजय कर देता है और संपूर्ण राज दोनों साथ करने लगता है. Okay, so that's a story of loyalty and chastity, and I'm going to end with another story from the Vedic literatures, which is a very famous story of Savitri and Satyavan. और गुरु महाराज एक और एक कथा बताने जा रहे हैं सावित्री और सत्यवान के बारे में. So once upon a time, here's another story. There was a man named, a king actually named Ashvapati. एक समय एक राजा था जिसका नाम था अक्षपति. No, Ashvapati. अश्वपति. That means he's the controller of horses. अश्व के मतलब है घोड़े के जो नियंत्रण करता है. So he prayed to Lord Brahma for a son. और अश्वपति ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि मुझे संतान चाहिए. And he was given the blessing to have a daughter instead of a son. और उनको आशीर्वाद मिला कि लड़की लड़का की जगह मिले. And she was so beautiful that nobody wanted to marry her. वो इतना सुंदर थी कि कोई उसके साथ एक नहीं करना चाहता. Why is that? ऐसा क्यों? Why? Because if someone is extremely beautiful, all the other men will be looking at her all the time. अगर तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर हुई, इसके मतलब जीवन भर तुम्हें वॉचमैन रख पड़ी. And she'll be able to control you. और वो इतनी सुंदर रहेगी तो तुम्हें निरंतर करके धरेगी. So the most important quality to look for in a wife is that she can cook nicely. स्त्रियों में सबसे सुंदर गुण है कि वो भोजन अच्छा पकानी चाहिए. Cooking is more important. भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुंदरता नहीं. As they say, a way to a man's heart is through his stomach. क्योंकि वो किचन संभालना जानती है. They understand that? You know, the channel. The stomach is the channel to the heart. गुरु महाराज कह रहे उधर जो है और हृदय एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं. भोजन बढ़िया रहेगा, हृदय में उसके प्रति लगाव रहेगा. So, anyway, so nobody wanted to marry her, so her father said, you gotta find your own husband. तो उनके पिता ने अश्वपति ने कहा कन्या से कि तुम्हें अपना पति खुद खोजना चाहिए. So she went all around and she came back after a year, and Narada Muni was there at the same time.
पूरे ब्राह्मण के, और 1 साल बाद आए देवर्षि नारद वहां पर थे। And the father asked, "Who you find? Who did you find?" And she said, "This nice young man, Satyavan." तो उसने पिता ने कहा किसको आप पसंद किए, तो उसने कहा सत्यवान जो है। And Narada Muni said, "He's really nice, but he's also it's a bad choice." देवर्षि नारद ने कहा बहुत ही बढ़िया आपका उसको चुनना है, लेकिन ये खतरनाक भी है। And she said, "Why is it a bad choice if he's really nice?" तो उसने बोला अगर आप ये अच्छा है तो आप क्यों कह रहे हैं कि खराब भी है। Narada Muni said he's going to die exactly in 1 year from today. तो ने कहने लगा कि 1 साल में उसका देहांत हो जाएगा। So she still was very determined. Satyavan was the son of a king named Jumatsena. और सत्यवान जो है वो किसका बेटा है? जुमत्सेना का बेटा है। But this king was living in the forest because he was kicked out of his kingdom because he was blind. क्योंकि ये राजा अंधे थे तो इनको राजपाट से निकाला गया था, इसलिए वन में रहता था। So she went to live in the forest, even though she was a queen. She gave up all that, or a princess. She gave up all that to be with her husband in the forest. और उनकी पत्नी भी सब कुछ त्याग कर अपने पति के साथ वन में रहती थी। Similar to the story of Devahuti and Kardama Muni in the Bhagavatam. भागवतम में देवहूति और कर्दमा मुनि के भी यही कथा है। Devahuti was a princess, and she went to live with her husband, a sage, and she had to be very austere. और देवहूति सभी जानते हैं मनु के संतान होते हुए सब कुछ त्याग कर वन में अपने पति के साथ कर्दमा मुनि के साथ रहने लगा। Of course, eventually she got rewarded by having an airplane house. और वो तपस्या से उसको वरदान मिला था कि एक And eventually she got the विमान मिला था, 1 साल के लिए उसमें लोग रहते थे। and eventually she got the greatest son, Lord Kapildev. और फिर उनके एक और वरदान था कि उनके यहाँ पर भगवान स्वयं कपिल देव प्रकट हुए थे। So Savitri served her husband for 1 year. She gave up all of her fine clothes and ornaments, and very austere in serving her husband. सावित्री जी ने अपना संपूर्ण सभी ऐशोआराम को त्याग किया, अपने पति को वन में सेवा करने लगी। So 3 days before her husband was supposed to die, she started fasting and doing austerities for the welfare of her husband. 3 रोज पहले उनके पति के देहांत होने से पहले वो उपवास करने लगी। On the actual day that he was supposed to die, she went to the forest with him as he was collecting firewood. और जिस दिन उसका निधन होना था उसी दिन अपने पति के साथ वो वन गई थी लकड़ियां बटोरने के लिए। And basically he had a heart attack. और उनका क्या हुआ? हृदय का दौरा पड़ा। And he died with his head on his wife's lap. और वो जब मरा तो उनका जो सर है उनके पत्नी के हाथ पे था। And then she saw Yamaraj with a noose, these are the Varuna ropes, pulling the little soul out of the body of Satyavan. यमराज जी आए, वहां प्रकट हुए और वरुण देवता के रस्सी से उनकी जो बहुत ही छोटी आत्मा है उसको खींच रहा था। And she started to follow him. और सावित्री जी उसके पीछे पीछे जाने लगी। So he said, "Go back, lady." यमराज ने कहा आप वापस जाइए। And she said, "Well, I followed you for 7 steps, and anyone who takes 7 steps with you becomes a friend." और सावित्री कहने लगी मैं तुम्हारे 7 कदम साथ में चली, और कोई प्राणी 7 कदम साथ में चलता है तो मित्र बन जाता है। That's why in the marriage ceremony we have 7 steps. इसलिए विवाह संस्कार में 7 बताया गया, 7 जो कदम रहते 7 में चलते हैं। So be careful who you take 7 steps with. आप किसके साथ जो सप्तपदी है किसके साथ लेते हो? So Yamaraj and her had these discussions, and she was questioning him and he was questioning her, and he became very pleased with the answers that she was giving. और ऐसे वार्तालाप में क्या हुआ, यमराज जी बहुत प्रसन्न हो गए जो सावित्री माता उनके जो उत्तर दे रहे थे। So the first thing that happened is he said, "I'm so pleased. You could ask for a benediction, but you can't have your husband back." और बहुत प्रसन्नता से कहा तुम वरदान मांग लो, और सब वरदान कोई मांग सकते लेकिन अपना पति का प्राण नहीं मांगना। She said, "That's all right. So please give me the benediction,
that my father-in-law, Jumatsena, will get his eyesight back. और क्या हुआ, वो कहने लगी कि मेरा जो ससुर है उनका जो नेत्र है ज्योति मिल जाए. And Yamaraj said, okay, he can have his eyesight back, but you can't have your husband back. ठीक है, बहुत चतुर नारी थी कि तुम वो कर सकते, लेकिन तुम्हारा पति नहीं मिले. And he became pleased again by another question and answer period. And he said, what else do you want? But you can't have your husband back. और यमराज ने कहा, और क्या चाहते हो? खाली पति नहीं मिले. So she said, I want my father, Ashwapati, to have 100 sons. Because remember, he always wanted a son and he only got a daughter. तो उनका जो पिता है अश्वपति, उनके पास 100 संतान आ जाए. And Yamaraj said, okay, go back. Go back. Your father can have 100 sons. But she continued to walk with him. और कहा कि ठीक है, 100 संतान मिल जाएंगे, अब वापस जाओ. लेकिन फिर भी सावित्री उनको पीछे पीछे जाने लगी. So then they had some more discussion, and Yamaraj said, all right, one more blessing. That's the last blessing. और फिर कहा, आखिरी एक और वरदान मांग लो, बस यही आखिरी रहेगा. But no way, you're not going to get your husband back. पति नहीं मिलेगा, और कुछ मांगो. And she said, okay, I want to have 100 sons by my husband. उसने कहा ठीक है, पति नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे 100 संतान मुझे चाहिए. And Yamaraj was so frustrated with this lady following him everywhere. He didn't think about what he was. He said, all right, you can have 100 sons. Now go back. तो यमराज जी ने असमंजस में पड़ गए. ठीक है, तुम्हें 100 संतान मिलेंगे, भूल गए कि क्या बोल रहा है, लेकिन अब वापस जाओ. And she said, well, you promised me 100 sons with my husband. Where's the husband? 100 संतान के लिए पति चाहिए, पति कहाँ है? And he was very frustrated. He said, all right, you could have your husband back and he'll live for 400 years and you can have 100 sons and your father can have 100 sons and Ashwapati and he got 100 sons and anyway, your husband's father can get his kingdom back. And by her chastity, she defeated Yamaraj. तो बोलने का प्रयास रह जाता है. उसने कहा, तुम्हारा 100 संतान मिलेंगे, तुम्हारा पति को वापस मैं कर रहा हूँ, और तुम्हारा ससुर के नेत्र आ जाएंगे, तुम्हारा अश्वपति जो पिता है उनके 100 संतान होंगे, और सभी वरदान दिए. इसी तरह से उसने यमराज को पराजित कर दिया. So you may think that these are just stories, but it's true. If you remain faithful, not only in married life, let's say if a disciple remains faithful to the Guru and serves the Guru, they become very powerful. ये कहानी नहीं है. अगर आप श्रद्धावान हैं, भक्ति के मार्ग में अपने गुरु के प्रति निष्ठा धरे हो, अपने पति पत्नी के प्रति निष्ठा हो, तो आपका हमेशा विजय हो. Just like in my life, I am completely dedicated to serving Prabhupada and his mission. गुरुदेव कह रहे कि मैं कृष्ण भावना में अपने गुरु श्रील प्रभुपाद जी के निष्ठा से सेवा कर रहा हूँ. And so in that we have to tolerate so many things, and then that's how Krishna gives us blessings. और ये सेवा करने के लिए मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है, और ये सहन में ही तुम्हें आशीर्वाद मिली. तुम्हें सहना पड़ेगा. Everyone wants the blessings of Krishna. And so sometimes some devotees go and they just chant Radhakund or someplace like that. But to actually get the blessings, Yasha Prasada, Bhagavat Prasada, Yasha Prasada, Dopey, you remain faithful. लोग जाते हैं कभी राधा कुंड में, वहां रहते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं तुम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा धरना, उनकी कृपा के द्वारा तुम्हें भगवान की कृपा. So thank you very much, and now we have the ceremony, right? गुरु महाराज सभी भक्तों को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं. और अभी जो है, जो बताया गया है, जिसको हम अंग्रेजी में एंगेजमेंट कहते हैं, जिसको मुद्रिका मिलन उत्सव कहते हैं, वो होने जा रहा है. One wife, one life. एक पत्नी और एक जीवन. Yeah, one wife, one husband too. एक पत्नी व्रताधरो गुरु महाराज यही बता रहे. We don't believe in polygamy and we don't believe in polyandry. Anyway, so they're ready? ठीक है, हम आग्रह करेंगे धामी जी से
और कार्तिक जी से दमयंती और कार्तिक जी दोनों आगे आ जाए। ये पंडाल जो है आपके द्वारा शोभायमान नहीं है, आप आकर इस जो आसन दिया गया है आज की रात्रि आपके नाम के सब भक्त लोग करते हैं और एक यादगार बनाने के लिए। तो मैं आग्रह करूंगा पहले कार्तिक जी को, और जितने उनके मित्र हैं नहीं है तो कीर्तिराज और नाथ जी जाकर कार्तिक जी को लाकर बैठ करिए। All right, so what happens here? Are they ready or? Arjun is bringing it up. So they can have a little chanting while they're हरे coming. कृष्णा, क्योंकि वो अंदर आ रहा है तुम लोग थोड़ा से मंत्र का उच्चारण करेंगे और दूल्हा राजा आ रहा है कार्तिक जी।